ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायाम् अथैकोनविंशोऽध्याय। नारद उवाच। ब्राह्मण विधेमावाग किं जातं तदन्तरं कथ्यत्वं प्रसादेन ता कथा पापनाशिनीं। ब्रह्मोवाच। श्रूयतां सा कथा तात यज्जातं तदन्तरं तव स्नेहात् प्रवक्ष्यामि शिवलीलामुदावहाम्। धैर्यस्य व्यसनं दृष्ट्वा महायोगी महेश्वरा विचिन्त्य मनस्येवं विस्मितोऽति ततः परं। शिववाच। किमु विघ्ना समुत्पन्ना कुवर्तस्तप उत्तमं केन मे विकृतं चितं किर्कृतमत्र कुकर्मिणा। कुवर्णं मया प्रीतया परस्त्रियुपरि वैकृतं जातो धर्मविरोधत्र श्रुतिसीमा विलङ्घिता। ब्रह्मोवाच। विचिन्तयेत्तथं महायोगी परमेशं सतां गति दिशो विलोकयामास परितं शक्तितस्तदा। वामभागे स्थितं कामं ददर्शाकृष्टबाणकम् स्वशरं क्षेपतु कामं हि गर्वितं मूढचेतसं। तं दृष्ट्वा तादृशं कामं गिरीशस्य परात्मना सञ्जातकरोत्सं दर्शत्तत्क्षणादपि नारदा कामासिततो अन्तरिक्षे स धृत्वा तत्सशरं धनु चिक्षेपास्तरं दुर्निवारं मोघं शङ्करे मुने बभूवामोघमस्त्रं तु मोघं तत् परमात्मनि संशामयत्ततस्सिमन्सङ्क्रुद्धं परमेश्वरे मोघीभूते शिवे स्वेस्तरे भयामापाशु मन्मथा च कम्पे च पुरा स्थित्वा दृष्ट्वा मृत्युञ्जय प्रभुं सस्मार त्रिदशान् सर्वान् चक्रादीन् भयविह्वला। सस्मरो मुनिशार्दूल स्वप्रयासे निरर्थके कामेन सुस्मृता देवा शक्राध्यास्ते मुनीश्वरा आयुः सकलास्ते हि शम्भु नत्वा च तुष्टुः स्तुतिं कुवर्तसु देवेषु कृत्यसाति हरस्य हि तृतीया तस्य नेत्रादे निस्सार ततो महान् लाटमध्या गात्समातस्स बहिर्दत्र सम्भवा जज्ज्वालोर्ध्वशिखोदीप्त प्रलयाग्नि सम्प्रभा उत्पत्य गगने तूर्णं निपत्य धरणी तले भ्रामं स्वपरितापपात मेदनी परि भस्मसात् कृतवान् साधो मदनं तावदेव हि यावच्च मरुतां वाच शम्यतामिति हतेति स्मन् समरे वीरे देवा दुःखमुपागता रुरुदुर्विहलाक्षाति क्रोशन्त किं भूदिति श्वेताङ्गविकृतात्मा च गिरिराजसुता तदा जगाम मन्दिरं स्वं च समादाय सखीजनं क्षणमात्रं रतिस्तस्त्र विसंज्ञा सा भवत्तदा भृत्रमृत्युज दुःखेन पतिता समृता इव जातायां चैव संज्ञायां रतिरत्यन्त विह्वला विल्लाप तदा तत्रोच्चरन्ति विविधं वचा। रतिरुवाच। किं करोमि क गच्छामि किं कृतं दैवतैर्हि गृह मत्स्वामिनं समाहूय नाशयामासु रुद्धतं हा हा नाथ समरस्वामिन् प्राणप्रिय सुप्रद इदं तु किं भूत्तद्र हा हा प्रिय प्रियेति च। ब्रह्मवाच। इत्थं विलपति सा तु वदन्ति बहुधा च वचा
हस्तोपादो तदास्वाल्य केशानत्रोट् यत्तदा तदितलापं तदा श्रुत्वा तत्र सर्वे वनेचरा अभवन् दुःखिता सर्वे स्थावरा अपि नारदा एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवा शक्रा दयोऽखिला रतिमूर्चु समाक्षास्य संस्मरन्तो महेश्वरम् देवाऊर्चु किञ्चिद्वस्म गृहीत्वा तुं रक्ष यत्नाद्वयं त्यज जीवयिष्यति स स्वामी लप्स्यसे त्वं पुनः प्रियं सुखदाता न कोऽपस्ति दुःखदाता न कश्चन सर्वपि कृतं भुक्ते देवान् शोचसि वै वृथा ब्रह्मवाच इत्याख्यास्य रतिं देवा सर्वे शिवमुपागता सुप्रसाद शिवं भक्त्या वचनं चेदं ब्रुवन् देवौचु भगवन् श्रूयतामेतद्वचनं न शुभं प्रभो कृपां कृत्वा महेशान शरणागतवत्सला सुविचार्य सुप्रीत्या कृतिं कामस्य शङ्कर कामेन तत्कृतं यत्र न स्वार्थं तन्महेश्वर दुष्टेन पीडितैर्दैर्वे स्तार्केनाखिलैर्विर्भो कर्म तत्कारितं नाथ नान्यथा विधि शङ्करा रतितेराकिनी देव विलापं दुःखिता सती करोति गिरीश त्वं च तामाक्षास्य सर्वदा संहारं कुर्तु कामोऽसि क्रोधनानेन शङ्करा दैवते सह सर्वेषां हत्वास्तं यदि संहरं दुःखं तस्य रतिर्दृष्ट्वा नष्टप्रायाक्ष देवता तस्मात् त्वया च कर्तव्यं रत्या शोकापनोदनं ब्रह्मवाच इत्याकर्ण्यं वचस्तेषां प्रसन्नो भगवान् शिवा देवानां सकलानां च वचनं चेदं ब्रवीत् शिववाच देवाक्ष ऋषया सर्वे मद्वच शृणु तादरात् मत्कोपेन च यज्जातं तथा नान्यथा भवेत् अनङ्गसत्त्वावदेव सयातकामो रतिपति प्रभु या वाचव तरेत् कृष्णो धरण्या रुक्मणीपति द्वारकायां यदा स्थित्वा पुत्रानुत्पादयिष्यति तदा कृष्णस्तु रुक्मिण्या काममुत्पादयिष्यति प्रद्युम्नं नाम तस्यैव भविष्यति न संशया जातमात्रं तु तं पुत्रो शम्बरा स हरिष्यति हृत्वा प्रास्य समुद्रे त्वं शम्बरो दानवोत्तम मृतं ज्ञात्वा वृथा मूढो नगरं स्वं गमिष्यति तावच नगरं तस्य रते स्थेयं यथा सुखं तत्रैव स्वपते प्राप्ति प्रद्युम्नस्य भविष्यति तत्र कामो मिलित्वा त्वं हत्वा शम्बर्मा भवे भविष्यति सुखी देवा प्रद्युम्नाख्यस्व कामिनीं तद्धियं चैव यद्द्रव्यं नीत्वा स नगरं पुनः गमिष्यति तया सार्धं देवा सत्यं वचो मम ब्रह्मवाच इति श्रुत्वा वच शम्भोर्देवा ऊचु प्रणम्य तं किञ्चिदुच्च वसिताक्षिते करो बद्धवा दाङ्गगा देवाऊर्चु देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो शीघ्रं जीवय काम तवं रक्ष प्राणान् रतिर्हर ब्रह्मवाच इत्याकर्ण्यमर्वच प्रसन्ना परमेश्वरा पुनर्भभाषे करुणासागर सकलेश्वरा शिववाच हे देवा सुप्रसन्नोऽस्मि जीवयिष्यामि चान्तरे कामासमद्रनो भूत्वा विहरिष्यति नित्यशः
नाख्येयमिदमाख्यानं कस्यचित् पुरतासुरा गच्छत स्वस्थलं दुःखं नाशिष्यामि सर्वथा ब्रह्मवाच इत्युक्त्वा रुद्रो देवानां सतुवतां तदा सर्वे देवा सुप्रसन्ना बभूवुगतविस्मया ततस्तां च समाक्षास्य रुद्रस्य वचने स्थिता उक्त्वा वचस्तदियं च स्वयं स्वं धाम ययुर्मुने कामपत्नी समादिष्टं नगरं सा गता तदा प्रतीक्षमाणां तं कालं रुद्रादिष्टं मुनीश्वरा। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे कामनाश्वर्णन नामेकोनविंशोऽध्याय। अथ विंशोऽध्याय। नारदुवाच विदे नेत्र समुद्धृतो बहिज्ज्वलाहरस्य सा गता कुत्र वद तत्त्वम् तचरितं शशिमौलिना। ब्रह्मवाच यदा भस्म चकाराशु नयनानला शम्भो कामं प्रज्ज्वाल सर्वतो विफलस्तदा हाहाकारो महान् त्रैलोक्य सचरे सर्वे देवर्षसत्तात शरणं माययुर्दुत्रं सर्वे निवेदयामासु सस्तदुःख माकुला सुप्रणम्य सुसन्तूय करो बद्ध्वा नतानना तच्छ्रुत्वां शिवं स्मृत्वा तदेतुं सुविमर्श च गतः विनितात्मा त्रिलोकावन्नहेतवे सन्दग्धुकाम सशुचि जर्वालमलातिदीपता स्तम्भिन्तोरं मया शम्भु प्रसादप्त सुतेजसा अथ क्रोधमयं ब्रह्मिं दग्धुकामं जगत्त्रयं वाडवन्तं कार्शं च सौम्यज्ज्वाला मुखं मुने त्वं वाडतनुमहं समादाय शिवेच्छया सागरं समगावलोक हिताय जगतां पति आगतं मा समालोक्य सागरास्वाजलिर्मुने धृत्वा च पौरुषं रूपमागतासनिधिं नम श्रूप्रं नम्याथ मा सिन्धु संस्तूय च यथाविधि स मामुवाच सुप्रीत्या सर्वलोकपितामहं सागरुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं ब्रह्मानत्राखिलाधिपा तनिदेश सुप्रीत्या मत्वा मा च सेवकम् अथाहं सागर वच श्रुत्वा प्रीतिपुरःसरं प्रावोचं शङ्करं स्मृत्वा लौकिकं हितमावहन् ब्रह्मवाच शृणुतात महाधीमन् सर्वलोकहितावह वच्म्यहं प्रीतित सिन्धो शिवेच्छा प्रेरितो हृदा अयं क्रोधो महेशस्य वाडवात्मा महाप्रभु दग्ध्वा कामधृतं सर्वं दग्धुकामो भवतता प्रारथोऽहं सुरे शीघ्रं पीडिते शङ्करेच्छया तत्र गत्य द्रुतं तं वै तातस्तम्भितवाञ्छुचिं वाडवं रूपमाधता तमादाय गतोऽत्र निर्दिशामि जलाधार त्वामहं करुणाकरा अयं क्रोधो महेशस्य वाडवं रूपमाक्षिता ज्वालामुखस्तव्याधार्यो यवदाभूत् सम्पल्लवं यत्दातात्राहं समागम्य वत्यसामि सरितां पते तदा तव्या परित्याज्य क्रोधोऽयं शङ्करोदुता भोजनं तोयमितस्य त्वं नित्यं भविष्यति यत्न देवावधार्योऽयम् यथा नोपेति चान्तरम् इत्युक्तो हि मया सिन्धुर्
ग्रीचक्रे तदा ध्रुवं गृहीतं पाण्डवं व्रहिं रौद्रं चाक्ष मन्यता तथा प्रविष्टो जलधोत्सवाडवत्नुशुचि वार्योघान सुदन् हस्तस्य ज्वालमालाभिदीप्ता तथा सन्तुष्टचेतस्क स्वं धाम गतो मुने अन्तर्धानमगात् सन्धुर्दिर्वरूप प्रणम्य मां स्वास्थ्यं प्राप जगत्सर्वं निर्मुक्तं तद्वादया देवा बभूव सुखिनो मुनश्यक्ष महामुने इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे वड्व वानरचरितवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः।